सक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि कोई अगर वैकेंसी क्रिएट होने वाली है तो उसके लिए वेल इन एडवांस तैयारी करना। तो पॉलिसी ये डिटरमाइन करेगी कैसे आपको करना है। राइट। ये पॉलिसी ऑन सक्सेशन प्लानिंग फॉर बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। जाओगी कंपनी में तो ये सब इंश्योर कर, वही है ना, वही लिखा हुआ है कि कंपनी शुड हैव सक्सेशन प्लानिंग फॉर द बोर्ड। ठीक है, सेव करके रख लो इसको। रखा है सर, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल इसके एस्पेक्ट देखेंगे, क्योंकि अभी एक्सेल बनती जा रही है, हम रिमार्क लिखते जा रहे हैं, कहीं डिस्क्लोजर, कहीं पॉलिसी, हाँ, तो हर चीज हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। राइट चलो आगे। Fifth, A. The board of directors shall lay down a code of conduct for all members of the board of directors and senior management of listed entity. B. The code of conduct shall suitably incorporate in the duties of independent directors as laid down in Companies Act 2013. क्या बोल रहा है? कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कंपनीज एक्ट में है उसको ड्यूटीज उसमें लिखी होनी चाहिए। हाँ, ड्यूटीज उसमें लिखी होनी चाहिए। हाँ। तो अभी पहले आप क्या करो, कोड ऑफ कंडक्ट डाउनलोड करो और ये देखो कि उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज लिखी हुई है कि नहीं। इसी में मिल जाएगा। सीडीएसएल पे जा रही तो सीडीएसएल की कोड पॉलिसी में मिल जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट प्लस सीडीएसएल लिख दो। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बीओडी बोर्ड प्लस लिस्टिंग रेगुलेशन प्लस सीडीएसएल। गौरे गौरे कौन शहनशाह, इस तरह तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन हम जान शहनशाह। ठीक है। डेफिनेशन देखो सेकंड लाइन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशनल ड्यूटीज व्हिच आर सेट आउट इन एनेक्सर 1 ऑफ द कोड। C2 में देखो। ठीक है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट डू एंड डोंट फॉर बोर्ड है कि बोर्ड को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, सेव करके रख लो इसको। तो हम कोई भी चीज आ रही है वो हम सेव करते जा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी। सो इस एकेडमी का प्रैक्टिकल वर्जन है। राइट। 6. The board of directors shall कंपनी में लिख लो Company should lay out code of conduct for board and senior management covering independent directors' duty. या COD लिखो, पॉलिसी लिख दो। पॉलिसी ही लिखो। सब आपके पेज पे चल रहा है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, सर के ऊपर नहीं जा रहा है ना कुछ भी। नहीं नहीं। And include for ID CSR duties to be incorporated. Right.
The board of directors shall recommend all fees or compensation, if any, paid to non-executive directors, including independent directors, and shall require approval of shareholders in general meeting. जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट करना है फीस और कंपेंसेशन, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. बोर्ड करेगा रेम्यूनरेशन रिकमेंड और अप्रूवल लगेगी शेयर होल्डर की. हाँ. नेक्स्ट पढ़ू. The requirement of obtaining approval of shareholders in general meeting shall not apply to payment of sitting fees to non-executive directors if made within the limits prescribed under Companies Act 2013 for payment of sitting fees without approval of central government. जितना कंपनी एक्ट में लिखा है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के, दैट मींस 1 लाख रुपीस पर मीटिंग, उतने तक अगर आप दे रहे हो तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है पहले क्लॉज में. Okay. The approval of shareholders mentioned in clause A shall specify the limits for the maximum number of stock options that may be granted to non-executive directors if any financial year and in aggregate. ठीक है, तो जो शेयर होल्डर की आप बोल रहे हो कि अप्रूवल लेनी है, उसमें लिखा होना चाहिए कि मैक्सिमम कितनी स्टॉक ऑप्शन दे सकते हैं डायरेक्टर को. हाँ. The approval of shareholders by special resolution shall be obtained every year, in which the annual remuneration payable to a single non-executive director exceeds 50% of the total annual remuneration payable to all non-executive directors, giving details of remuneration thereof. ठीक है, अगर किसी एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप जितनी दे रहे हो वो सबका 50% से ज्यादा है. सपोज अभी सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिला के आप 3 लाख देते हो और एक अकेले को ही आप 2 लाख दे रहे हो, तो आपको शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए उसके लिए. हाँ, through special resolution. Okay. Independent directors shall not entitled to any stock option. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं दी जाएगी. राइट. तो उसका इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा ना. हाँ. The fees or compensation payable to executive directors who are promoters or members of the promoter group shall be subject to the approval of shareholders by special resolution in general meeting if the annual remuneration payable to such executive director exceeds rupees 5 crore or 2.5% of net profits of the listed entity, whichever is higher. Or where there is more than one such director, the aggregate annual remuneration to such director exceeds 5% of the net profits of the listed entity. Provided that the approval of shareholders under this provision shall be valid only till expiry of term of such director. अब ये क्या बोल रहा है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमडीएस, वो तो प्रमोटर भी है, तो उसको अगर 5 करोड़ से ज्यादा या कंपनी के नेट प्रॉफिट के 2.5% से ज्यादा अगर देने की बात करते हैं, या 2 भाई है और दोनों ही प्रमोटर है और दोनों ही एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनकी सैलरी 5% से ज्यादा हो रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और वो उनकी करंट टर्म तक ही वैलिड रहेगा. राइट. ठीक है, लिख दो. 6 मतलब बेसिकली रेम्यूनरेशन था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का. तो सर ये एबीसीडी करके ही डालने पड़ेंगे ना सारे क्लॉजेस. हाँ, छोटे छोटे उसमें डाल दो फटाफट. सर क्या हो रहा है, ए में बोल रहा है ऑल फीस शुड बी टेकन शेयर होल्डर्स अप्रूवल, और सेकंड में ना नहीं, ऑल फीस एंड कंपनसेशन
to be recommended by board and approved by shareholder of non-executive director. या वो चेंज बता 3 जगह पे 3,10,000 और कहाँ पे चेंज हो रहा था वो फुल्ली पे बस 3 देखना फुल्ला कोई कॉस्ट बताने 1 मिनट होल्ड करो. ईमेल only if more than 1 मिनट होल्ड लिखो करो. कि एक मिनट होल्ड करो. आप लिख लो तब तक. तू देखेगा क्या उसको कहाँ है भी भेजा ना बाद में तुम लोग को ये R6? हाँ, इसमें पहले रेजोल्यूशन के अंदर 310 33 350 385 410 435 बढ़ेगा. भरना वैसे ही था ना. यस. तो बाहर देगा और इसकी एक्सप्लेनेटरी में भी नीचे. हाँ 310 33 350 3 के 7 8 85 3 30 410 3 50 8 4 35 ये बराबर. और एक इसकी उसमें और इधर तारीख फुल्ली येट टू बी फुल्ली पेड. बस ये 3 करेक्शन थी. हाँ बाकी तो और कोई चेंज नहीं. और एक जगह पे ये 310 33 350 385 410 435 बराबर. तो अमाउंट इन रुपीस ऊपर भी आ रहा है ना. अमाउंट इन रुपीस अमाउंट इन रुपीस अमाउंट इन रुपीस बराबर है. लिख दो. ओके मोबाइल हाँ जी. ये देखो सर करेक्ट लिखा क्या मैंने. एक सेकंड बोलो. इफ फीस कंपनी विद इन सीए लिमिट्स नहीं ना. इफ फीस एंड कंपल्सरी की क्या. इफ सिटिंग फीस if fees and compensation and नहीं की जगह सिटिंग फीस. $1 lakh per meeting. ठीक है. शेयर होल्डर अप्रूवल टू स्पेसिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ ESOP टू एनईडी. ठीक है. आपके एंगल से लिखो. हो जाए तो मेरे को आवाज मारो तो फिर मुझे क्योंकि समझना आपको जरूरी है. इसलिए क्या किस 797 करोड़ 87 लाख 23.
टकूरी ओके है बेटा, भेज दो। ये ओके है, तो हमारा साइन क्यों नहीं लगा रहा? नहीं, पर यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ। किसका मेंशन किया? ये अपना है, ये इनका है। तो ये किसका है? ये अदर कोई ऐसा आ रहा था। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसका आंगने का डाला है? उधर और ये असाइनी अगर रहेगा तो नीचे वाला। ठीक है, तो भेज दो सर। साइन लगा के ऑब्वियसली अपना साइन लगा के सर को एक बार बताता हूँ कि आप ही आपके पास ही थे चेकिंग के लिए। हाँ, इस पे साइन सिग्नेचर किनके पास है? उनके पास है। सिग्नेचर लगा दे, तो लगा हुआ फॉर्म उनको भेज कि ये फॉर्म आगे ट्रस्टी को भेज रहे। हट, हाँ तक पहुंचे। ये देखो। ठीक है, ये ऊपर लिखा है शेयर अप्रूवल टू स्पेसिफाई, लिखो 4 की जगह 6C में शेयर अप्रूवल टू स्पेसिफाई मैक्सिमम ईसोप टू द नॉन एग्जीक्यूटिव। टू ऑल ना सर, टू ऑल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाँ, ऑल सच एग्जीक्यूटिव जो कि रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलेटेड टू प्रमोटर, सबने प्रमोट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रैकेट में प्रमोटर्स।
ये shall be valid till expiry term of this director. ठीक है. Seventh, the minimum information to be placed before board of directors is specified in part A of schedule 2. करो शेड्यूल 2 पे क्लिक करो. हाँ. ठीक है. देखो क्या क्या चीजें रखनी पड़ती है इसके आगे. ये एजेंडा आइटम, एजेंडा में इतनी चीजें चाहिए. क्या क्या अच्छा. देखो. Annual operating plans and तो budgets जब भी and लिस्टेड कंपनी का एजेंडा बनेगा तो ये मिनिमम इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको एक्स्ट्रा रखनी है बोर्ड के साथ. हाँ. क्या क्या. Annual operating plans and budgets and any updates. B. Capital budgets and any updates. C. Quarterly results for listed entity and its operating divisions or business segments. D. Minutes of meetings of audit committee and other committees of board of directors. E. The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the level of board of directors, including appointment or removal of chief or financial officer and the company secretary. Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices, which are materially important. Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems. H. Any material default in financial obligations to and by listed entity or substantial non-payment for goods sold by the listed entity. Any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order which may have strictures on the conduct of a listed entity Restriction. or Order. Restrictive order. taken on adverse view regarding another enterprise that may have negative implication on the listed entity. Details of any joint venture or collaboration agreement, transaction that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property, significant labor problems and their proposed solutions, any significant development in human resources, industrial relations, relations like signing of wage agreement, implementation of voluntary retirement scheme, etc. Sale of investment, subsidiaries, assets which are material in nature and not in normal course of business. Quarterly details of foreign exchange exposures and steps taken by management to limit risk and adverse exchange rate movement if material. Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirement and shareholder service such as non-payment of dividend, delay in transfer, etc. बैक टू टॉप पे क्लिक कर दो. नीचे लिखा राइट साइड में बैक टू टॉप. हाँ हाँ. ले लो. ठीक है. लिख दो इसको और एंट्री कर दो. यहाँ तो सिर्फ शेड्यूल 2 ना सर. क्या बोर्ड information as minimum information to be placed before board. और उसके आगे एजेंडा लिख दो. या बोर्ड मीटिंग क्या लिख रहे थे.
आगे राइट वाले कॉलम में एजेंडा लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? बोर्ड मीटिंग लिख रहे यहाँ ना नहीं नहीं, राइट साइड ऑल टाइम। एजेंडा। हाँ ठीक है, ये एजेंडा में आना चाहिए। तो जनरली क्या करते एजेंडा लिखा कंपनियां था एक अपन ने। टेबलर फॉर्म, हाँ टेबलर फॉर्मेट में बना के इसके आगे उसके आंसर लिखते रहते हैं। हम्म चलो आगे। Eighth, the chief executive officer and the chief financial officer shall provide the compliance certificate to the board of directors as specified in part B of schedule 2. Compliance certificate regulation 78. The following compliance certificate shall be furnished by CEO and CFO. A, they have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year, and that to the best of their knowledge and belief, these statements, these statements do not conduct any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading. These statements together present the true and fair view of listed entities' affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations. There are, to the best of their knowledge and belief, no transactions entered into the listed entity during the year which are fraudulent, illegal, or violative or of the listed entity's code of conduct. They accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting, and that they have evaluated the effectiveness of internal control systems of the listed entity pertaining to financial reporting, and they have disclosed to the auditors and the audit committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which they are aware, and steps are have taken and proposed to take to rectify these deficiencies. They have indicated to the auditors and audit committee significant changes in internal control over financial reporting during the year, significant changes in accounting policies during the year, and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements. Instances of significant fraud of which they have become aware and involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entities internal control system over financial reporting. इसको समरी में बोलते हैं सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट। जाओ ऊपर, अब आपकी समरी में जाओ। और ये क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है तो एनुअली आता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ। सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट टू दी बोर्ड, तो ये बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। CEO CFO certificate to be placed in the board meeting along with financial statements. ठीक है, बोर्ड मीटिंग एजेंडा लिख दो। ठीक है, रेगुलेशन भी होते जा रहे हैं और शेड्यूल्स भी होते जा रहे हैं। हाँ। Listed entity shall lay down procedures to inform members of the board of directors
about risk assessment and minimization procedures. The board of directors shall be responsible for framing, implementing, and monitoring the risk management plan for the listed entity. ठीक है, यहाँ से एक और पॉलिसी आ रही है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, क्या लिखोगे? कंपनी टू ले डाउन प्रोसीजर फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड बोर्ड टू ले डाउन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। 9A 9A में नील है, 9B में पॉलिसी। To lay down, no? Company to inform BOD about risk minimization procedure, risk procedures. और नील, ठीक है। और 9B में बोर्ड टू फ्रेम रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। हाँ, The evaluation of independent directors shall be done by entire board of directors, which shall include performance of directors and fulfillment of independence criteria as specified in these regulations and their independence from the management, provided that in the above evaluation, the directors who have subject to evaluation shall not participate. ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इवैल्यूएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा बिना उस डायरेक्टर के, और उसमें आप उसकी परफॉर्मेंस और इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया को रिव्यू करोगे। हाँ, लिख दो। Performance evaluation of ID to be done by board. excluding ID. And will cover performance and independence criteria. and will Cover performance and independent criteria. The statement to be annexed to the notice as referred to subsection 1 of section 102 of Companies Act 2013 for each item of special business to be transacted at general meeting shall also set forth clearly the recommendation of board to the shareholders on the each specified items. ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बोर्ड की रिकमेंडेशन होना कंपलसरी है।
ठीक है, आगे चलो। 17A, maximum number of directorships. The directors of listed entities shall comply with the following conditions with respect to the maximum number of directorships, including any alternate directorship that can be held by them at any point of time. First, a person shall not be a director in more than 8 listed entities with effect from April 1, 2019, and in not more than 7 listed entities with effect from April 2020. अभी एक आदमी 7 से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर। लिस्टेड में तो पहली लाइन लिख दो। एक काम करो, 2 मिनट ही है, पहले पूरा सेक्शन हाँ। समझ लो, बाद में आप लिखते रहो। हाँ, आगे देखो। provided that shall not serve as independent director in more than 7 listed entity। 7 में डायरेक्टर नहीं हो सकता और 7 से ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हाँ, राइट। फिर 2 में अगर कहीं पे किसी कंपनी में वो होल टाइम डायरेक्टर या एमडी है तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। और उसके लिए केवल इक्विटी लिस्टेड कंपनी हम कंसीडर करेंगे। ओके। तभी आओ अपनी समरी में। not more than 7 directorship in listed company। 7 directorship ब्रैकेट में इंक्लूडिंग आईडी। तो 7 इंडिपेंडेंट बन जाओ या 7 नॉन एग्जीक्यूटिव बन जाओ इन लिस्टेड कंपनी। इन लिस्टेड कंपनी, ठीक है। राइट। इफ होल्डिंग पोजीशन ऑफ WTD और MD in any company, then maximum 3 independent directorship। थ्री आईडीज, ठीक है। तो 7 और 3 का रूल है, अगर कहीं पे भी होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो 7, अगर कहीं पे होल टाइम डायरेक्टर है तो 3 ऑल टाइम, ठीक है। अब एक बार ऊपर से नीचे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, अपना आज का 17 हो गया। 50 सेकंड्स में बताओ सारा। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर 1/3 आईडी होने चाहिए अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है, 1/2 अगर प्रमोटर है, रिलेटेड टू प्रमोटर है, फिर मिनिमम 6 डायरेक्टर्स चाहिए टॉप, इसके लिखो टॉप 2000 कंपनी में। फिर जिनके स्पेशल इक्विटी राइट्स हैं उनमें हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। फिर अगर किसी को 75 से ऊपर आपको अपॉइंट करना है, कंटिन्यू करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट करते हो बोर्ड में तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग या 3 मंथ में अप्रूवल लेनी है। बोर्ड मीटिंग में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, गैप 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, quorum 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ, 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिपोर्ट रखो, सक्सेशन पॉलिसी बनाओ,